to analyze that if we have Hamiltonian of a system and if we want that any physical quantity in that particular system is going to conserve or not, if we want to discuss this particular thing, then obviously we can easily use the Poisson bracket and we can see the time evolution of any physical quantity. But the thing is that we have to write that physical quantity as a function of generalized coordinate, generalized momentum, as well as a time. So let's try to go for step by step some problem, some different types of problem, and we will just try to figure it out how we can use to analyze the symmetry of a system. So what we have learned into the last class, we have df upon dt is equal to f h plus del f upon del t. And f and h is nothing but the Poisson bracket between some physical quantity f and h. And obviously, we have to always take care of this Hamiltonian. This Hamiltonian is a function of generalized coordinate, generalized momentum, and it is function of time. And same time, this f is also function of generalized coordinate, generalized momentum, as well as function of time. So we have to always take care of these two things. In last class, some students have also asked this question that this f, whether this f should be as a function of generalized coordinate or generalized momentum, and that variable is also related to Hamiltonian. So why we can see the relationship between, we can see the basic interconnection between h and f. Okay, so step by step we will try to solve different types of problem, and we will try to also break a different type of myth in a physics. So suppose we are just going to start with some problem, which is, first we will go for one problem related to free particle, and then we will go for another one for simple pendulum, harmonic oscillator, and we will try to analyze some different type of physical quantity. So let's straightforward. We are going some basic problems. Okay. So the first problem, if Hamiltonian of a free particle, obviously we all know the Hamiltonian of a free particle is basically p square upon 2m. So this is Hamiltonian of a free particle, and there is some physical quantity. Let's say this physical quantity is f, and this is x minus pt upon m. So this is my physical quantity f as x minus pt by m. You can see this f is an explicit function of time. Okay, this f is an explicit function of time, and we will also try to analyze what is this particular f. Hence it is free particle, so we can solve it very easily, and we will try to analyze what is this particular f and how, whether this f is going to conserve for this particular Hamiltonian or not. So let's try to go for this. So what we have, obviously we have to use this particular equation. So this particular equation is df upon dt is equal to f h plus del f upon del t. And here we can easily find del f upon del x. X is generalized coordinate, p is conjugate momentum, and we have del h upon del p, where only one generalized coordinate is that, so we can use px or p, there is not any problem, minus del f upon del p into del h upon del x plus del f upon del t. That value is equal to minus p upon m. This p and this p is same p. Okay, so I will also take this. So we can write first del f upon del t. Okay, then we will going to calculate all this thing. So what do you have? What is del f upon del x?
is 1. What is del H upon del P? P by M. P by M. Very good. So this is P by M. What is del F upon del P? Minus T by M. Minus T by M. What is del H upon del X? 0. Isn't it? Now let's go for what is del F upon del T? Minus P by M. What you can find? You can find this value and this value is going to cancel out. ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? Cancel out हो रहा है. Then what you have? You have df upon dt is equal to 0, which implies f can be treated as a constant of motion. Isn't it? And you can also see that df upon dt is not equal to del f upon del t. This is only correct for the Hamiltonian, isn't it? Suppose I am using this for the Hamiltonian. Suppose we are talking about the Hamiltonian. Then what will happen? dh upon dt must be equal to h, and plus we have del h upon del t. And what will be h and h? 0. So you have dh upon dt is equal to del h upon del t. So for Hamiltonian, the total derivative with the time is equal to the partial derivative with the time. But it is not always correct for all other physical quantity. You can see here. Here you have df upon dt for the free particle is going to 0, but df upon dt is not equal to del f upon dt. Hence you can see this f is the explicit function of time. This f is explicit function of time. In spite of that, this f is actually constant of motion. So you can use this as a conserved quantity. You can use this as a constant of motion. Are you getting my point? Yes, sir. Let us try to figure it out. What is this particular f? क्या है ये f? और उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं. So let's try to find what is this particular f. यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो आप बात कर सकते हो. Everyone is comfortable? Okay. Now let's try to figure it out. ये f है क्या और उसे हम कैसे देख सकते हैं, है ना? And you will surprise. Yes, it is really constant of motion, or it is really constant for this particular free particle. If I am talking about free particle, mathematically I am talking about this particular Hamiltonian of a system. So if you know this Hamiltonian of a system, you can easily calculate all other things. Let's try to go for this. Okay, so this is my Hamiltonian. Let's try to go for the equation of motion. So del H upon del P is equal to what? X dot. So what do you have? P by M is equal to X dot, isn't it? Yes, sir. And you can also have del H upon del X is equal to minus P dot. So what is del H upon del X in this particular problem? That is 0, isn't it? So minus P dot is equal to 0. So P is actually constant. Yes. So momentum is conserved. We all know that for the free particle, momentum is always conserved. So if your momentum is conserved, now you can going to integrate it. So when you are going to integrate it, what you will get? You will get X is equal to Pt by M plus some integration constant, that is C. And now if you are going to equate this C to your F, what is your F?
f is equal to x minus pt upon m. And here this c is nothing, but this can be also x minus pt upon m. And what you can see this f and this c are the same thing. So what we have done, we have proved that this integration constant is actually constant, isn't it? Yes, sir. This is your integration constant. You have just calculated and you have find that okay, this is my integration constant. And what we have done, we have just find this c as a function of x and t. This is nothing but the integration constant for your time evolution x as a function of t. So this is going to be a constant, and this is going to be conserved during the motion. So look at the beauty of this particular thing. If you are using this particular beautiful part, you can easily analyze the internal symmetry of a system and different type of thing. Isn't it? It is very surprising. Yes, sir. नहीं है? Yes, sir. So it's a very interesting. Now you can make anything mathematically with the help of generalized coordinate, generalized momentum, and you can check whether it is useful for you or not. And yes, if it can be treated as a constant of motion, that means, or if it is the conserved during the whole time evolution, then obviously you can use it to calculate, to analyze different type of property of your system. So you can now go to your all other physics problem in a particle physics. Suppose someone is asking you that whether parity is conserved or not. If you know the Hamiltonian, and if you are just trying to see the parity, the commutation of the parity with the Hamiltonian, then you can easily analyze whether this parity is conserved or not. Similarly, you can talk about the isospin. Similarly, you can talk about the spin. Obviously, we all are talking this thing in a quantum mechanical form, but basically, that commutation is actually generated by this Poisson bracket or time evolution, or the use of this Poisson bracket in a time evolution of any physical quantity. Let us go for a next problem. This is a very interesting. Okay. Yes, sir. So let us go for next one. Let us assume the Lagrangian of simple pendulum is half m L square theta dot square plus mgl cos theta. Suppose this is your Lagrangian of a system. Then obviously, first question is that let us calculate the Hamiltonian. Then we have to just talk about dH upon dt. And then we have to also calculate dl upon dt. And let us try to figure it out that what will happen, whether if for the sum system, if Hamiltonian is going to conserve or not, we can also check it. And for the same system, whether this Lagrangian is going to conserve or not. By the way, in a straightforward problem, that this Lagrangian is explicit function of time or not explicit function of time? Not explicit function of time. Not. है ना? So if it is not an explicit function of time, then Hamiltonian must be conserved. Yes? Yes, sir. Okay, but we will try to do it in a step-by-step form. So let us first figure it out. What is Hamiltonian? So Hamiltonian is p theta dot minus half m L square theta dot square minus mgl cos theta. We have to replace this theta dot. So what will happen? Del L
upon del theta dot is equal to p theta. And what you will get? You will get ml square theta dot is equal to p theta. Theta dot is equal to p theta upon ml square. We can easily put all this thing here. So I think you will get it easily. P theta square upon 2ml square minus mgl cos theta. And let us try to figure it out. What will happen? dH upon dt. This is very trivial actually, but we have to do it. dH upon dt is nothing but h and h plus del h upon del t. Everyone is comfortable? Yes, sir. And h and h is going to commute. Del h upon del t is also 0. So dH upon dt is equal to 0, which implies h is conserved quantity, which is identified as what? Total energy of a system. And this h is here nothing but the kinetic energy plus potential energy of a system. Yes, this h is nothing but kinetic energy and potential energy. Now we have calculated this one, we have analyzed this one, and now you can see this whether this Lagrangian is explicit function of time or not. No, sir. No. So what is your intuition is saying? That dl upon what should be the dl upon dt? It should be 0. Huh? Not necessary. No. Not necessary. Yes, Not sir. necessary. Why? Because it is not necessary for total time derivative of any another function apart from the Hamiltonian will be equal to the partial time derivative of that particular function. Isn't it? Let us try to figure it out. But before that, we should make sure that we have to write Lagrangian mathematically as a function of generalized coordinate and generalized momentum. तभी तो Poisson bracket का use कर पाएंगे. I am 100% agreed that Lagrangian is function of generalized coordinate and generalized velocity. But yes, we know that the generalized velocity and generalized momentum are related to each other. So we can mathematically replace our generalized velocity with the generalized momentum. So we can easily replace it. So what will be my Lagrangian as a function of generalized momentum? So I can again put this theta dot as p theta by ml square. Mathematically, can we do it or not? Yes, sir. Yes, we can do it. Okay. We can do it. Okay. Now, so what will happen? So we can put half ml square. What is your theta dot? Is p theta square upon m square L to the power 4 plus mgl cos theta. So my Lagrangian is p theta square by 2ml square plus mgl cos theta. Now let's try to see what is going to happen for dl upon dt. देखते हैं क्या होता है dl upon dt. So I can easily use this space. So what will happen to dl upon dt? dl upon dt can be written as L H plus del L upon del T. Please mind it, the Hamiltonian is also not explicit function of time. The Lagrangian is also not explicit function of time. Both are not explicit function of time. But you can see what will happen. Del L upon del theta, del H upon del p theta minus del L upon del p theta, del H upon del theta plus 0. And here you can see what is going to happen. Del L upon del theta क्या होगा? Del L upon del theta minus mgl sin theta. minus mgl Sin theta. sin theta. Del H upon del p theta, what will happen?
P P by theta P theta upon ml square. ml square. वेरी गुड, ये नजर आ रहा है ना? ओके, नहीं एक मिनट सर, थोड़ा कट रहा है। हाँ, अब ठीक है, ये सर अब सही है। अब सही है। ओके, थोड़ा बहुत एडजस्ट करते रहना पड़ता है ना? ओके, सपोज सेकंड वाला क्या होगा? डेल एल अपॉन डेल पी थीटा, फटाफट बताओ। P theta upon ml P square. theta upon What is del h upon del theta? H कहाँ लिखा है? H कहीं निकाला था, यहाँ निकाला था, है ना? MGL sin क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस? plus MGL sin प्लस plus mgl mgl. sin। वेरी गुड, प्लस mgl sin थीटा। अब देखो क्या हो रहा है, ये दोनों क्या कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को? no sir नहीं कर रहे हैं, नहीं सर। है ना? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, what you will get? You will get dl upon dt is equal to actually 2 times p theta sin theta upon l with a negative sign, isn't it? ठीक लिखा हूं? Yes sir. G भी आएगा सर g भी आएगा, g भी आएगा, don't worry. And now which is not equal to 0, please, this is more interesting. क्या आ रहा है वो तो अलग बात है, but the most interesting thing is this is not equal to 0. Are you getting my point? Yes. Yes. And you can see, for the same system, the Hamiltonian, which is t plus v, is constant of motion. But for the same system, the Lagrangian, which is t minus v, is not constant of motion, isn't it? And both are not explicit function of time. ये भी बड़ा मजेदार है ना? Both are not explicit function of time. This is very interesting. So only time को देखकर आप नहीं बता सकते हो कि ये आपका बेसिकली कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा या नहीं होगा. You have to just see the relationship between that function and Hamiltonian, and then you can work with this particular concept. Every year, at least one question will be always there, either from the quantum mechanics, from the classical mechanics, by using this one. So whenever the conservation word will come into picture, think like that. And what is the most important thing? Hamiltonian of a system. If you know the Hamiltonian of a system, you can easily talk about the conservation principle. Everyone is comfortable? Yes sir. ठीक है, एक और प्रॉब्लम करें? Yes sir. ओके, नाउ अब तो आपको दिमाग में आ गया ना क्या करना है. इस तरह के प्रॉब्लम जब भी आएगा, तो जब भी आ गया, कोई भी सपोज कोई भी फंक्शन है और वो कंजर्व है या नहीं है, ये यही तो पूछेगा एग्जाम में. तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या निकालोगे? हैमिल्टोनियन. Hamiltonian. और फिर Yes, sir. हैमिल्टोनियन निकाल करके क्या करोगे? उसका पॉइजो ब्रैकेट निकालोगे, है ना? Yes sir. और ऑब्वियसली आप ये भी चेक करोगे कि वो टाइम एक्सप्लिसिट है या नहीं है. तो बेसिकली आप dl और df अपॉन dt की बात करोगे. लेट अस ट्राई टू गो फॉर अ नेक्स्ट वन. ठीक है, okay. Let us try to go for this problem first, then we will go for another one also. Okay, so suppose our Hamiltonian of a system is given, and what is this? Is px square upon 2m plus py square upon 2m
प्लस हाफ m omega square x square plus y square. Okay, and let us have some particular physical quantity, and let us have this is half s x py minus y px. Let us have this particular thing, and let's try to figure it out whether it is constant of motion or not. ये जरा देखते हैं ये constant of motion है या नहीं. Okay, and here we are using what? How many dimension? We are using basically two-dimensional. Two-dimension. है ना? S is explicit function of time? No, S is not a explicit function of time. तो हमें क्या करना पड़ेगा? ds upon dt is equal to s h plus del s upon del t. यही होगा ना? Yes, sir. Okay. Now we have to just try to calculate this particular thing. Now अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? कितने समेशन आने चाहिए आपके पास? बताओ, इसे जब ओपन करेंगे तो क्या होगा? डेल एस अपॉन डेल एक्स डेल एच अपॉन डेल पी एक्स माइनस डेल एस अपॉन डेल वाई डेल एच अपॉन, सॉरी क्या कर रहा हूं, गलत, डेल एस अपॉन डेल पी एक्स डेल एच अपॉन डेल एक्स. ठीक है ना? Yes, sir. ये x का पार्ट हो गया. सिमिलरली हमें किसका पार्ट देखना पड़ेगा? Y का. y का. डेल x अपॉन डेल y डेल h अपॉन डेल पी वाई माइनस डेल s अपॉन डेल पी वाई इंटू डेल h अपॉन डेल y प्लस ये वाला पार्ट तो जीरो अपने आप नजर आ रहा है. सो नाउ अब एग्जाम में जब भी आए तो आप पूरा पेशेंस रखोगे कैलकुलेशन कैसे करना है, क्योंकि इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 5 मार्क्स के होंगे, है ना? सो ऐसा मत करना कि कोई एक ही को लेकर के कर लिया. यू हैव टू जस्ट गो फॉर ऑल पॉसिबल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड देयर इज नॉट एनी एक्स वाई टर्म. ओके, सो ओके, चलो एक एक करके करते हैं और आप मुझे गाइड करो मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं. डेल एस अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा? हाफ तो रहेगा ही. ठीक है. डेल एक्स अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा यहां पर? पी वाई. Yes, sir. पी वाई. डेल एच अपॉन डेल पी एक्स क्या आ जाएगा? पी एक्स बाई एम. दिस विल बी पी वाई बाई 2. ठीक है ना? माइनस डेल एक्स अपॉन डेल पी एक्स बताइए क्या होगा? Minus y upon 2. माइनस वाई बाई 2. आराम से देखते जाना. डेल एच अपॉन डेल एक्स इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट पेशेंस रखना है. क्या होगा? एम स्क्वायर एक्स. यही होगा ना? Yes, sir. ठीक है, चलो दूसरा वाला देखते हैं. ये तो हो गया. प्लस अब वाई वाला देखना है ना. डेल एक्स अपॉन डेल वाई क्या होगा जरा बताओ? minus px माइनस पी एक्स बाई 2. डेल एच अपॉन डेल पी वाई पी वाई बाई एम. ठीक है. माइनस डेल एस अपॉन डेल पी वाई X by 2. एक्स बाई 2. वेरी गुड. डेल एच अपॉन डेल वाई Omega square y. एम ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस 0. कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, एवरीथिंग इज गोइंग टू कैंसिल PXPY आउट. upon 2m. ये वाला इसके साथ कैंसिल हो रहा है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. यहां माइनस है तो ये दोनों भी क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है. वाओ, लुक एट दिस. व्हाट इज दिस थिंग? दिस इज कंजर्व क्वांटिटी. This x you can use constant of motion. लास्ट ईयर ये शायद TIFR में था. लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर सेम नोटेशन में दे वर इन TIFR. बट उसमें आने से पहले हम लोगों ने
This question was in your tutorial, है ना? So look at here. This S is actually constant of motion. कितनी आसानी से पता चल रहा है कि ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है कि नहीं. यहां फिजिक्स देखते रहो, घूमते रहो, समझ में नहीं आएगा. एंड देन वी कैन एनालाइज, अरे क्या है भाई, किस तरह का सिस्टम है, कौन सी क्वांटिटी है, पहले चेक तो कर लें. कैन एनीबॉडी गेस व्हिच क्वांटिटी इज दिस वन? Angular momentum. LZ. LZ, exactly this is LZ. And now you can see this quantity, this is your Hamiltonian, is actually in which coordinate system? In XY coordinate system, and this is moving in a horizontal plane, isn't it? Yes, sir. ये किस में मूव कर रहा है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है. और अगर कोई भी पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कैसा फोर्स है? This potential is conservative potential. You can easily put x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. So what is your potential energy? Your potential energy is half m omega square r square. And this thing can be written into the polar coordinate. So if you are going to write it in a polar coordinate, then pr square upon 2m plus p theta square upon 2mr square plus half m omega square r square. Which quantity is going to conserve here? P theta. P theta. And what is P theta? Momentum in What is P theta? Angular momentum. Angular momentum. And angular momentum in which direction? Z direction. Z cap direction. So you can identify this is nothing but angular momentum in Z cap direction. Analysis is different thing. Obviously, if you want to do the analysis, you have to go for the next level of intuition. That is different thing. But at the very primitive level, what you can do? You can at least use this beautiful mathematics and you can just say whether it is conserve or not conserve. Yes, Are you sir. people happy? Yes, sir. Sir, Batao. sir, how we will say P theta is conserved, sir? How I have said? Because it is cyclic coordinate. Yeah, If theta is cyclic coordinate, then which quantity is conserved? P theta. P theta. Yes, sir. Okay. Yes, You can sir. easily check here. Del H upon del theta is equal to minus P theta dot. This is not explicit function of theta, so it is 0. So P theta is equal to what? Constant. Isn't it? Yes, sir. Yes. Look at how things are connected in classical mechanics. Is that any role to remember the formula? No. What you have to remember? The formulation. Which formulation have to used at which level? यही तो करना होगा. Yes? Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलो. So एक और प्रॉब्लम करें या उसे होमवर्क दूं मैं आपको? Then एक और. एक और करते हैं. चलो. अब तो जितना चाहो उतना प्रॉब्लम कर सकते हो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. आपको क्या आना चाहिए? पार्शियल डिफरेंशियल अच्छे से आना चाहिए, है ना? Yes, sir. चलो. लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस वन ऑल्सो. ये भी पिछले बार जेस्ट में आया हुआ है, बट उसके पहले हम लोगों ने क्लास में से डिस्कस कर लिया है ना? अगर आप देखोगे 2 साल पहले की मेरे वीडियो, तो उसमें भी यही चीज है. दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर. कौन सा सिस्टम है ये? Harmonic oscillator. हार्मोनिक ऑसिलेटर. सो अब मैं एक बड़ा ही अजीब सा फंक्शन लेता हूं. ठीक है? क्यू पी टी. और ये क्या है? ये है ln p प्लस आई ओमेगा क्यू माइनस आई ओमेगा टी. कुछ
है फंक्शन आई ओमेगा टी, वो बाद की बात है। अब हमें ये चेक करना है, वी हैव टू जस्ट चेक वेदर दिस यू इज कंजर्व फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर और नॉट। ये तो टाइम का फंक्शन है, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टाइम का फंक्शन है ना ये? यस, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो कई लोग जिन्हें बेसिक नॉलेज नहीं होगी, वो जिनका इंट्रोस्पेक्शन नहीं रहेगा, वो बोलेंगे अरे ये तो टाइम का फंक्शन है, कंजर्व नहीं होगा। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? पार्शियल डेरिवेटिव से थोड़ी कंजर्वेशन पता चलेगा। किसके थ्रू कंजर्वेशन पता चलेगा? Total derivative. टोटल डेरिवेटिव से। और टोटल डेरिवेटिव के लिए आपके पास बहुत ही प्यारा सा टूल है। कौन सा टूल है? यूज ऑफ पॉइजो ब्रैकेट। So let's try to go for this. Del u upon del q, del h upon del p, minus del u upon del p, del h upon del q, and plus del u upon del t. del u upon del q बताइए तो क्या होगा? बताइए। I omega upon P plus I omega Q. 1 बाई, पहले तो p प्लस आई ओमेगा क्यू कर दें, और q है तो ऊपर में आई ओमेगा भी होगा। वेरी गुड, ठीक लिखा हूं, है ना? आप चेक Yes, sir. करते रहना। देखो मेरे पास सॉल्यूशन होता नहीं है एक्चुअली, सो एवरी टाइम दिस इज न्यू क्वेश्चन फॉर मी। डेल एच अपॉन डेल पी क्या होगा भाई? P by M. p बाई एम। गुड। माइनस डेल यू अपॉन डेल पी क्या होगा? 1 अपॉन P p plus I प्लस omega. आई ओमेगा क्यू। वेरी गुड। डेल एच अपॉन डेल क्यू क्या होगा भाई? एम ओमेगा Omega स्क्वायर square क्यू। एंड डेल यू अपॉन डेल टी क्या होगा? माइनस Minus I आई omega. ओमेगा। ओके, अब ये तो बड़ा ही क्लमजी लग रहा है ना? क्या किया जाए? तो सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करें बताओ? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो कैसे सिंप्लीफाई करें? 1 बाई पी प्लस आई। कॉन्जुगेट क्या ले लें? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई क्यों भैया, ऐसा क्या है जो कॉमन ले conjugates? लें ये, हाँ। इसको कॉमन ले लेते हैं, दोनों तरफ है ना? फिर देखते हैं आगे क्या होता है। Yes, और यहाँ पर क्या है? आई ओमेगा है। सर हम हाँ, P ओमेगा upon भी कॉमन ले सकते हैं ना उसमें, ओमेगा बाय पी ओमेगा भी प्लस कॉमन आई ले ओमेगा लेते हैं। चलो भाई, ओमेगा भी कॉमन ले लेते हैं। चलो ओमेगा भी कॉमन ले लेते हैं। और क्या ले कॉमन? और भी कुछ ले सकते हैं कॉमन? नहीं सर, नहीं। चलो अब बताओ अंदर क्या आएगा? P आई upon पी अपॉन एम, ठीक है ना? और यहाँ क्या कॉमन आएगा? M Q, माइनस M क्या आएगा? omega M omega. एम ओमेगा क्यू माइनस आई I ओमेगा। bracket ठीक है। सो इसको और कुछ कर सकते हैं क्या? अगर आई को कॉमन ले लें तो क्या होगा? M omega Q upon I हो जाएगा। एम ओमेगा क्यू अपॉन आई हो I जाएगा। वहां से ओके, कॉमन आ जाएगा। ठीक है। सो देखते हैं, आई ओमेगा पी प्लस आई ओमेगा क्यू। एक मिनट, यहाँ एम भी तो नहीं छुपा हुआ है। लेट मी चेक, मैं क्वेश्चन सही लिखा हूं ना? ओहो, सॉरी सॉरी, एक प्रॉब्लम है। सॉरी सॉरी सॉरी, हियर इज एम इज ऑल्सो देयर, इसी कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर एम भी है, आप प्लीज चेक कर लो। फिर से थोड़ा सा हमें रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। सो आई एम ओमेगा क्यू कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे? यहाँ पर एम आ जाएगा ना? Yes, sir. ठीक है। और यहाँ भी क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। Denominator. Denominator. हाँ Denominator में. P plus I omega हाँ, Q. डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा एम। पी प्लस आई एम ओमेगा क्यू। सॉरी सॉरी, ठीक है। अब कुछ हो रहा है क्या? एम और एम, आई को कॉमन ले लें।
तो यहाँ पर Yes, क्या sir. होगा, आई नीचे आएगा, आई के ऊपर लेंगे तो ये प्लस आ जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आ जाएगा, सो आई ओमेगा बाई पी प्लस आई एम ओमेगा क्यू, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पी प्लस आई एम ओमेगा क्यू और माइनस आई ओमेगा। 0 है sir. अरे जीरो आ रहा है, वेरी गुड। दैट मीन्स व्हाट, डी U यू is conserved. अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। सो यू हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन, Motion. है ना। अब देख रहे हो, लंबा चौड़ा सा कुछ भी इक्वेशन है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, बट ये कांस्टेंट ऑफ मोशन, इतना तो हम जरूर कह सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, यस सर। है ना। अब ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, वो आपका नेक्स्ट लेवल की बात हो सकती है, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें मिल जाता है कि ये क्या है, ये कुछ भी है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है। टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज गोइंग टू 0। क्या हो सकता है, ऑब्वियसली ओमेगा टी का पार्ट है, तो दिस इज समथिंग काइंड ऑफ फेज जैसी कुछ चीजें होंगी, है ना। यस सर। इनिशियल हो सकता है, ये इनिशियल फेज हो, और इनिशियल फेज पूरे हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट ऑफ मोशन। हमें देखना पड़ेगा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए हमें माइंड स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, डायमेंशन एनालिसिस करना पड़ेगा, इजंट इट। यस सर। ये 100% ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होना चाहिए, है ना। ओमेगा टी मस्ट बी हम ऑलवेज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यही तो होगा, है ना। सो कौन सा डायमेंशनलेस क्वांटिटी हार्मोनिक ऑसिलेटर में इन जनरल कांस्टेंट होता है, ये हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मे बी देयर इज अ फेयर चांस दैट इनिशियल फेज इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। So you can see every problem, if we are the student of physics, then in each and every problem, we have to try to see the internal symmetry of a system. External symmetry of a system तो नजर आ जाता है, बट उसके अलावा भी कई ऐसी सिमेट्रीज होती है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे ये एनर्जी तो कंजर्व है, यस वी आर 100% एग्रीड, लेकिन और भी कुछ कंजर्व है क्या? क्या हम अपनी पूरी की पूरी फिजिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तक ही रख दे? नो, वी हैव टू डिग इट इन द कोर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, एंड हियर you will find the Hamiltonian and Poisson bracket will help you. Yes? Yes, sir. है ना? So let's finish this topic with a final note, and let's try to write the equation of motion with the help of a Poisson bracket. ठीक है? Yes, sir. सर जो हमने इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया था वो भी हार्मोनिक ऑसिलेटर था ना, 2 डायमेंशन वो में? 2 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर था, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हो कितना इंसाइट मिल रहा है आपको, isn't it? यस सर। है ना? And always try to include mathematics in your analysis. फर्स्ट लेवल पर मैथमेटिक्स के थ्रू ही एनालिसिस करो, सेकेंड लेवल पर आप उसको इंट्यूशन बेस्ड एनालिसिस बना सकते हो। क्लियर है ये? Yes, sir. Okay, good. So we have df upon dt is equal to f h plus del f upon del t, and let's say f is equal to q. Then what will happen? dq upon dt is equal to qh plus del q upon del t. And what is dq upon dt? It can be written as del h upon del p, and this will be qh plus del q upon del t. So this is nothing but the equation of motion, isn't it? Yes, sir. Similarly, we can go for dp upon dt is equal to
P and H plus del P upon del T. And what is dP upon dt? Minus del H upon del Q is equal to PH plus del P upon del T. And this is another way to write equation of motion with the help of Hamiltonian equation, है ना? और इन सब का क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत मजेदार यूज करते हैं. ठीक है? Yes, sir. Everyone is comfortable? Sir, it is del H upon del T, no, sir? Del H upon? Del T. Why del H upon del T? Huh? This is P dot. And what is P dot in the Hamiltonian equation of motion? Q. Huh? Please revise it. Okay? You are not revising. Del H upon del Q is equal to minus P dot. Yes, sir. Huh? So you are not revising, na? No, sir. Hmm? At least revise your copy. That will also enough, isn't it? Chalo. So on this note, we are just going to finish this part of Poisson bracket. And on the next class, we will just go for canonical transformation and generating function. So the formulation part will be over into next week. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ठीक है. 21 प्रकार संबंध